जय जगन्नाथ फ्रेंड्स मो त्रिपति सर आपण पीके स्टडी आई चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। तो चलते आज आम स्टार्ट करवा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रो टेस्ट नंबर 6 स्टार्ट करवा। तो देखो प्रथम क्वेश्चन जनरल नॉलेज रो देखो कौन कहूँ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट कॉज वाटर पोल्यूशन माने निम्नलिखित मध्य केउंटी वाटर पोल्यूशन पय दायी नुह। पेस्टिसाइड्स माने कोन जहाँ भी आम कौन कर जो कीटनाशक औषध गुड़ाक आम यूज कर फर्टिलाइजर हिसाब से आम कीट पतंग गुड़ाक मारे कौन कर जो आम शस्य एप्लाय कर पेस्टिसाइड्स द्वारा कौन वाटर पोल्यूशन हेनी कि वाटर पोल्यूशन हम जो आम जमी कौन कर पेस्टिसाइड्स गुड़ाक पकेबा शस्य पकेबा से गुड़ा जमी मिसिक कौन हम से वाटर जा कौन कौन मिसिब आमर रिफर वगैरह मिसिब जो द्वारा कि वाटर पोल्यूशन हम। देन देखा फर्टिलाइजर सेटा सेम आम जमी जो फर्टिलाइजर गुड़ा देते से गुड़ा जामर नदी रिवर बा सी रे मिसिब। देन इंडस्ट्रियल वेस्ट सेम टाइप जो देखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर द्वारा कौन हम आम वाटर पोल्यूशन होबार ना। दैट मीन्स आंसर कौन हो ऑप्शन बी हो यार आंसर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द क्रिप्स मिशन इन विजिटेड इंडिया इन 1942। 1942 समय रे वाइसरॉय किए थे इंडिया रो जेतोले कि क्रिप्स मिशन आस्तेला। तो देखियो यार वाइसरॉय किए थे लॉर्ड लिथगो थे यार वाइसरॉय। Which was the language used by the Gautam Buddha during his preaching माने तांकर धर्म को प्रचार करे समय से केउ लैंग्वेज को माने व्यवहार करथले कारण से कोन करथले पाली लैंग्वेज रे कहथले कारण पाली थिला गोटे लोकल लैंग्वेज थिला। द यूनाइटेड नेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन यूनाइटेड नेशन के एस्टैब्लिश हेतला अक्टोबर 22 1945 ना अक्टोबर 20 1945 और अक्टोबर 21 1945 ना अक्टोबर 24 1945। आंसर कोन हिजबो अक्टोबर 24 1945 हिजबो यार राइट आंसर। द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे केबे ऑब्जर्व करा होची माने डे रो मध्ये आसे गोटे क्वेश्चन। तो देखिबा तो केबे जून 5 रे हम कोन करथुन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे विश्व परिवेश दिवस हम कोन व्यवहार करथुन बा पालन करथुन। द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एटम कैन एकोमोडेट ए मैक्सिमम ऑफ गोटे आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एटम रे मैक्सिमम केतरा हम इलेक्ट्रॉन्स रखि परिबा ना 8टी हम इलेक्ट्रॉन्स हम आकु रखि परिबा। कोन रखिबे Big Ben is famous clock located in which country? Big Ben होची गोटे famous clock पृथ्वी रो जहा को सेटा केउ देश रो अछि। तो देखिबो यार आंसर हे जो इंग्लैंड रो अछि। सुल्तान आजलान शाह कप इज रिलेटेड टू ए जो कप गुडा को माने ए कपडा केउ स्पोर्ट्स को रिलेटेड पचारछि। तो देखिबो एटा कोन जो फील्ड हॉकी मैन। एटा हम नेक्स्ट देखिबा Which year was the प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना come into effect under the Ministry of Finance? Ministry of Finance द्वारा केउ वर्ष प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना काम आसला इफेक्ट हला 2016। तो नेक्स्ट देखिबा फुल फॉर्म ऑफ VPN। VPN रो जदि हम फुल फॉर्म देखिबा तो यार आंसर कोन है जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हिजबो VPN रो फुल फॉर्म। नेक्स्ट हम देखिबा ग्रुप बी देखिबा हु इज द ऑथर ऑफ विक्रमर्षि विक्रमर्षि। तो यार आंसर कौन हो कालिदास हो। Which one of the following is the classical language of India? इंडिया रो क्लासिकल लैंग्वेज केउटी ओडिया हो इंडिया रो गोटे क्लासिकल लैंग्वेज। Which device converts electrical energy into mechanical energy? मोटर कौन करछि ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करछि। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बा डॉक्टर अब्दुल कलाम received a prestigious भारत रत्न अवार्ड in which year केउ वर्ष रे हमको दिया जाइतला ना 1997 रे भारत रत्न अवार्ड दिया जाइछे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ए नीम ट्री द फर्स्ट स्टेप इज जेतोले कि नीम ट्री रे फोटोसिंथेसिस होउची यार फर्स्ट स्टेप कोन ना ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हु वाज द फाउंडर ऑफ योगा फिलोसफी। योगा फिलोसफी रो फाउंडर के तो यार आंसर है जो पतंजलि हिजबो यार आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची द नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड नेशनल एंड रूरल डेवलपमेंट हैज इट्स हेडक्वार्टर ए जो नाबार्ड हेडक्वार्टर केउंटर अछि ना मुंबई रो अछि नाबार्ड रो हेडक्वार्टर कोन रखिबे। हु अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंडिया रो चीफ जस्टिस माने के हु अपॉइंट्स माने इंडिया रो चीफ जस्टिस को के अपॉइंट करंती। तो यार आंसर कोन हिजबो यार आंसर हिजबो प्रेसिडेंट हिजबो यार आंसर कोन रखिबे। नेक्स्ट हम देखिबा
where does the word demerara sugar came from? तो यार आंसर देखिबा नेम ऑफ ए टाउन गोटे टाउन ना रे एरो demerara sugar आछि. At which place on the earth are days and nights are equal length always? केउठारे माने डे एंड नाइट्स इक्वल होची. तो देखिबा यार आंसर कोन जो इक्वेटर इज यार आंसर. Which is outermost planet in our solar system? हमर सोलर सिस्टम रो outermost planet रो सोलर सिस्टम रो outermost planet कोटा. तो देखिबा यार आंसर कोन हो जिवो नेपच्यून. Onatukara Sama geographical indication GI product recently seen in news is cultivated in which of the following state? Onatukara sesam केउठारे कल्टिवेट करा होची जाहाको जीआई टैग मिलिचे. तो यार आंसर कोन हिजिवो केरला हिजिवो. Carbohydrate is the plants are stored in the form of starch. Carbohydrate in the plants रे कार्बोहाइड्रेट केउ फॉर्म में स्टोर होची एडा कोन होची ना स्टार्च फॉर्म रे स्टोर होची मन रखिबे. नेक्स्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ ओपीईसी ओपीईसी रो हेडक्वार्टर केउंटर अछि वियना. ठीक अछि ऑस्ट्रिया वियना हेजो यार आंसर. अमर्त्य सेन हु won the Nobel Prize in Economics in which year? केउ वर्ष रे नोबेल प्राइज मिलला अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स रे केउ वर्ष ना नोबेल प्राइज मिलिছে. तो यार आंसर कोन हेजो 1998 हेजो 1998 मते हेजो यार आंसर. The gas that is vital in maintaining atmospheric temperature is the gas जो गैस टा के vital maintaining the atmospheric temperature is कौन कार्बन डाइऑक्साइड is your answer. Which of the following river is known as दक्षिण गंगा? कहा को हमें दक्षिण गंगा बोली कहबा ना गोदावरी को हमें कौन कहउछंती ना दक्षिण गंगा बोली कहउछंती. Who is author of the book हिंद स्वराज बुक रो लेखक के महात्मा गांधी होउछंती. हिंद स्वराज बुक रो लेखक. Who is the first winner of the ज्ञानपीठ अवार्ड? ज्ञानपीठ फर्स्ट विनर ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड फर्स्ट विनर के देखिबा. तो यार आंसर कोन हेजबो शंकर कुरुफ हेजबो यार आंसर. इन हाउ मेनी मेडल्स इंडिया ओन इन एशिया गेम्स 2023 रे एशिया गेम्स रे इंडिया केतोटी मेडल ओन करछि ना 107टी मेडल इंडिया ओन करछि. The Consumer Protection Act was the first promulgated in India in which year? promulgated केते मसिया रे ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ता फर्स्ट केते मसिया रे माने promulgate हेछि. तो यार आंसर हे जो कोन 1986 हे जो यार आंसर. Match the number it refers to viscosity of fluid, strength of material, density of gas, speed of sound. मेक नंबर माने कोन मेक नंबर अर्थ होछि जेउठारे कि जे कोनोसी वस्तु रो स्पीड ता कोन हेजिवो साउंड स्पीड रो अधिक गले ताका हमें कोन कहबा मेक नंबर कहबा. बा मेक नंबर अर्थ होछि रेशियो ऑफ द speed of sound and speed of object. What is the full form of the TTE in railway? Railway जो TTE होचंदी यांकर full form कोन travelling ticket examiner है जो आंसर. Travelling ticket examiner. The famous floating islands called Humidis are found in which of the following lake of India? इंडिया रे केउ लेक रे देखा जाउछ ना लक्तक लेक रे देखा जाउछ Humidis islands. Which is largest national park in India? जदि हम देखिबा सबठारो बड़ नेशनल पार्क इन इंडिया रा इंडिया इज आंसर कोन हेमिस नेशनल पार्क इज यार आंसर. मन रखिबे. वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन. वर्ल्ड हिंदी डे हम केबे सेलिब्रेट करछुंदी ना जनवरी 10 तारिख रे हम कोन करछुंदी वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व करछुंदी. Article 226 of the Indian Constitution related to the power of High Courts to issue certain rights. Certain rights power of High Court रो power के ना से कोन करि परिबो ना certain rates को से कोन करि इश्यू करि परिबो. आर्टिकल 226 अनुसार Odisha State Cabinet has approved extending Kalia scheme for another 3 years. In this context, who among the following is beneficiary of this scheme? यार बेनिफिशियरी किए तो देखिबा फार्मर्स माने कोन होचंदी कालिया योजना बा कालिया स्कीम अनुसार बेनिफिशियरी होचंदी. इन व्हिच ईयर भारत रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूट भारत रत्न अवार्ड केते मसियार माने आको स्थापित करला 1954 मसियार आको स्थापित कर जाय. Albuquerque captured Goa from the ruler of the which following regions. केउ मान काहाटरो कोन करले ना
ଆଲବୁକେରୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଆକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ତ ବିଜାପୁର ରାଜା ଠାରୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଗୋଆଟାକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। What is the period and group of the iron that is Fe ferrous in the table? Your answer କ'ଣ ହେଇଯିବ group 8 and period 4 ହେଇଯିବ ୟାର answer। International Olympic Committee is headquartered in which of the following places? तो यार आंसर कौन ହେଇଯିବ ଲାଉସାନେ ହେଇଯିବ यार आंसर। Article 51A of the Indian Constitution is related to which of the following? Fundamental duties को एटा रिलेट करछि। যদি আমি দেখিবা आर्टिकल 51A কথা देखियो एटा कोन होछि 42 अमेंडमेंट एक्ट रे आको कोन करा जायछि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आको ऐड करा जायछि। तो आको हम कोन कहउछन आको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को कहउछन। कुछ मुंड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। Who among the following was the first viceroy of British? First viceroy British काहो कहबा। तो यार आंसर कोन जो लॉर्ड कैनिंग हे जो यार आंसर ये फर्स्ट viceroy of इंडिया। between two countries like Konkan naval exercise conducted का मध्य रे केउ देश मध्य Konkan naval exercise होछि इंडिया और यूके दैट इज यूनाइटेड किंगडम मध्य रे होछि। रुक्मिणी देवी अरुणदाले इज ए रेपुटेड dancer in which of the following dancing केउ डांस रे ये पूरा फेमस होछन रेपुटेड होछन भारतनाट्यम है जो यार आंसर। व्हाट इज द मोटो ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया? यार कोन ना एवर ऑनवर्ड एवर वन होछि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया रो मोटो। Who is the Union Sports Minister of March 2024? अनुराग सिंह ठाकुर इज यार आंसर रखिबे। Sarnath is related to which of the following events in the life of Buddha? केउ following ना केउ events को दैट होछि फर्स्ट sermon of Buddha? Who is author of the book titled Viceroy Victory City? Victory City author of that title Victory City। तो यार आंसर कोन सलमान रशीद हे जिवे। नेक्स्ट हम देखिए मैथ देखिबा। मैथ रे कोन 10टा क्वेश्चन सब गोटा गोटे क्वेश्चन केतरे ना 10 मार्क कैरी करछ देखिबा। देयर आर टू वेज in which 5 may be expressed as them sum of two different positive terms, namely 5 माने कोन 4 3 4 plus 1 then आगो लिखे 3 और 2। in how many ways 9 can be expressed as the sum of the two different positive non zero integers? जीरो नथिबो ताहले हम कोन करि परिबा 9 को हम केन लिखि परिबा 9 माने 1 plus 8 को लिखि परिबा then आ कोन 2 plus 7 लिखि परिबा आ कोन 3 plus 6 लिखि परिबा नेक्स्ट आ कोन लिखि 4 plus हमें केते 5 लिखि परिबा ताहले केते 1 2 3 4। तो ये आंसर कोन हे जिवो 4 वेस हे जिवो यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। if n is an integer between 20 and 80 then the any of the following could n plus 7 expect? तो देखिबा यार आंसर कोन हे जिवो गिवन कोन कहउची ना 20 आउ से मधे गोटे इंटीजर रहबो जोटा कि n plus 7 केते हबो जदि हम कोन करिबा n रे 7 गोटे मिसेबा तो 20 plus 7 then n plus 7 that is 20 plus 7 सेटा केते आसीबो 27 n plus 7 then असला 87। तो 88 doesn't lies between 27 and 88 मध्य रे माने ए मध्य रे 88 टा पडिबो नै माने कोनटा आसीबो ना 88 टा आसीबो। if x y z be the digits of the number beginning from the left and the number is kete in the solution हम कोन करिबा the digits of the number from left are x y z respectively। so x is the 100 place and y is the tens place z is at ones place that means x y z। तो रिक्वायर्ड नंबर कोन हे जिवो हम कोन करि परिबा x रा कोन अछि 100 प्लेस रो अछि तो इनटू 100 करिबा देन एडा कोन अछि y रा 10 प्लेस रो अछि इनटू 10 करिबा देन तापर एडा कोन अछि 1 प्लेस रो अछि इनटू 1 करिबा जदि आउ कम ऐड करिबा कोन हे जिवो 100x प्लस एडा कोन हे जिवो 10y प्लस तापर केते हे जिवो z हे जिवो आई थिंक क्लियर हेतिबो। नेक्स्ट हम देखिबा द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज केते 2160 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2160 and the ratio केते देछि 12 देछि the number of such pairs केते हे परिबो से पचार ठीक अछि the number of such possible pairs केते हे परिबो
जदि एचसीएफ देछि 12 देछि ताहले कोन हे परिबो देखंतु 12x 12y नै परिबा कारण आमे एगुडा कोन नै परिबा प्राइम नंबर इच अदर हेतिबो x एंड y देन जतले आमे कोन करिबा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर देछि ताहले आमे जानचंदी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द एलसीएम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ दैट 12x and 12y equal to 160 then xy equal to 160 by 12 into 12 then आगु सॉल्व कले केते आसी 15 आसीला तो 15 माने हम दुईटा पेयर नै पारिया 5 1 15 देन से वैल्यू गुडा जदि हम पकेबा ताहले केते हिजो गोटे 35 60 आ गोटे 12 तो 80 हिजो तो दुईटा पॉसिबल पेयर हिजो एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज केते 23 देछि नेक्स्ट हम देखिबा and the other two factors of their LCM are केते 13 and 14 the largest number of two numbers and एथर हम जानचंदी तो टू नंबर शुड भी केते हिजो हेंस एचसीएफ जदि 23 हिछि ताहले हम कोन करबा 23 उ थरा हम कोन 13 गुणिबा देन आ गोटे 14 गुणिबा तो बट नंबर केते हिजो 14 गुणित नंबर 322 हिजो यार आंसर LCM of two number is केते ना 2 to 5 and the HCF के देछि 5 देछि if one number is 5 then the other number तो हम जानि चंदी कि LCM and HCF रो गुणफल is equal to the first number and second number ठीक अछि तो ताहले हम कोन करिबा LCM गोटे केते नेले 225 नेले 225 इनटू देन तापर केते गोटे नंबर होछि 5 LCM होछि 225 एंड HCF होछि केते 5 तो देटा जो हम गुणिबा ताहले आंसर कोन हिजो 25 इनटू केते हिजो सेकंड नंबर लिखिबा सेकंड नंबर देन सेकंड नंबर इक्वल टू केते आसीबो 2 2 5 इनटू 5 बाय 25 5 1 जा 5 5 जा देन 5 4 5 45 तो यार आंसर कोन हिजो 45 हिजो नेक्स्ट देखिबा द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज केते 96 एंड द एलसीएम के देछि 1296 एचसीएफ देछि 996 देछि एंड एलसीएम के देछि 1296 देछि तो इफ वन ऑफ द नंबर इज केते 884 समान के मध्य गोटे नंबर इज केते 864 देन द अदर नंबर तो सेम फार्मूला फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ तो फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इक्वल एलसीएम एंड एचसीएफ पकेबा फर्स्ट नंबर केते 864 into second number equal to केते आसीबो HCF 96 and LCM केते आसीबो 1296 तो सेकंड नंबर इक्वल टू हम कोन करिया माने गुणफल बाय 864 इक्वल टू केते 144 हेगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा देखंदु एवरेज ऑफ n number is केते a the first number is increased by 2 second number is increased by 4 the third number is increased by 8 so on the average of new number केते the sum of the numbers केते हम कोन करिबा केते इंक्रीज हेछि n number is increased average of n number is केते n a n a जदी ताहाले हम कोन आर सम जदी बाहर करिया कोन हेजिवो यार एवरेज आ नंबर ता जदी हम गुणिबो तार सम हेजिवो तो n a देन तापर द फर्स्ट नंबर इंक्रीज बाय फर्स्ट नंबर ता केते इंक्रीज हेछि कोन करिया 2 देन तापर सेकंड नंबर इंक्रीज बाय 4 देन तापर थर्ड नंबर इंक्रीज बाय 8 देन तापर तो ए टाइप रो कोन हेजिवो 16 एमती बडी बडी जिवो केते जे एन टर्म जाय जिवो नेक्स्ट हम कोन करिबा एस इक्वल कोन करि परिबा 2 + 4 + 8 + 16 यार हम बाहर करदा प्रथम यार समडा बाहर करिबा जदि सम बाहर करिबा तो फर्स्ट टर्म रा केते अछि ए माने केते 2 अछि देन जदि हम देखिबा देन कॉमन रेशियो टा केते होछि तो एटा 2 आसला तो एटा केते आसला 2 रो स्क्वायर देन 2 रो क्यूब देन 2 रो फोर्थ तो ताहले एटा कॉमन रेशियो टा कोन हो जो 4 बाय दैट इज 2 आसला तो देन जियोग्राफिकल सीरीज जदि हम देखिबा सीरीज रे केतना आसु देखिबा समडा देखिबा तो a into r to power n minus 1 by r minus 1 तो 2 into 2 to power n minus 1 by 2 minus 1 एटा जदि हम करिबा ताहले एटा कोन हो 1 एटा तो किछि नै तो 2 minus 1 1 ही रहि जो तो 2 into 2 to power n minus 1 हे जो देन रिक्वायर्ड एवरेज केते हे जो एवरेज माने कोन करिबा एटा माने ए नंबर टा प्लस जो n plus a by total number of numbers by n करिबा तो एटा कले n एटा कोन आसीबो एठारे एटा हम कॉमन बाहर कर देबा बा ताको हम सेपरेट लिखिबा n a by n plus 2 into 2 to power n minus 1 by जो n करिबा देन तापर n को n कटि जिवो
a plus 2 into 2 to the power n minus 1 by n. Next हम देखिबा a b c d e f g are conjugative even numbers, j k l m n are conjugative odd numbers, the average of the all the numbers is केते ताले आर जदि एवरेज बार करबा ताले कोन हो देखंतु according to the conjugative even numbers केते a b c d f g जाई देछि, then odd numbers गुडा के देछि n जाई देछि, conjugative even number केते 2 4 6 हम जानि चंदी, then जदि हम कोन करबा एवरेज बार करबा ताले 17 नै चंदी बाय 7 तो केते आसले मिडिल नंबर आसिले 8, देन conjugative odd numbers नै चंदी एमान को जदि ऐड करबा एमान को जदि हम कोन करबा एवरेज बार करबा तो देन केते हिजो 25 by 5 करबा तो केते आसिला 5 आसिला, same as the above situation average of a b c d e f g तो केते d, then average of j k l m एमान को मझिडा कोन हिजो I l j k m l, then required average केते हिजो d plus l by 2. The average of 9 conjugate number केते 9 देला, if the next two numbers are also included the new average w ताले एठा हम कोन करे देखंतु conjugate numbers माने एड कर जिबा a plus 1 a plus 2 a plus 3 a plus 4 a plus 5 a plus 6 a plus 7 a plus 8, then कोले 9 number देछि तो 9 number केते 9 number पकले, then average देछि 9 देछि तो हम कोन तार मध्ये 9 पकले, then जदि हम कोन करिया सॉल्व करबा तो केते हेला 9 plus 36 by 9 equal to n, then a plus 4 equal to केते हिजो नै हिजो equation 1. If next two numbers are included let the average ताहाले मन सेतरा आ दुईटा नंबर ऐड करबा तो ताहाले कोन हिजो तार एवरेज केते के हिजो तो भाई दुईटा नंबर ऐड करला मींस 9 थिला 9 plus 2 केते करबा 11 करबा तो देन केते आसला a plus 5 equal to k equation 2, then subtracting 1 from 2 we get केते k equal to n plus 1, that is therefore the new average केते आसीबो n plus 1 आसीबो. The average of 5 consecutive integers starting from m is n. What is the average of 6 consecutive integers starting from m plus 2? तो मनोरा में नेले let m equal to 1 नेले 5 consecutive integers कोन हिजो 1 to 5 हिजो, then जदि हमन एवरेज देखिबा केते हिजो n हिजो n equal to केते आछी 3 consecutive integers with starting from m plus 2 जदि नबा ताले केते हिजो 3 4 5 7 8 हिजो, तो देन जदि हम देखिबा एमनकर जदि 3 3 6 देन एमनकर एवरेज रखिबा बाय 6 minus 50 by 6 that is 11 by 6. Now check from the option put n equal to केते थिला 3 थिला तो 3 पकेला पर केते आछी 11 by 2 आछी, that means एटा ठीक अछि. देन देखिबा इंग्लिश देखिबा तो इंग्लिश ता देखंतु इंग्लिश कोन कहूची write an essay English on any of the following topic, तो हमें ग्लोबल वार्मिंग पर देखि देबा देन तापर अन्य गुडा हमें देखि परिबा. Global warming, a significant aspect of climate change, refers to the global gradual increase in Earth's average temperature due to the rising concentration of the greenhouse gases in the atmosphere. तो बोला human activities, particularly in burning fossil fuels, deforestation, industrial process, have significantly contributed to this phenomenon. As these gases accumulate, they trap heat from the sun, leading to a warming effect that distorts the weather patterns and माने ये जो ग्लोबल वार्मिंग कौथ में होची डिफॉरेस्टेशन में होची इंडस्ट्रियल प्रोसेस में होची एंड फॉसिल फ्यूल बर्निंग में होची ये सब गुडा कोन होची ए गुडा को एनवायरनमेंटल ट्रैप एक होची जो द्वारा कि से गुडा को वार्मिंग इफेक्ट क्रिएट करची. The consequences of the global warming are profound and multifaceted. One of the most alarming impacts in the melted polar ice caps, glaciers, resulting in the rising sea levels that threaten coastal communities worldwide. Additionally, global warming intensifies weather events, leading to more frequent and severe hurricanes, droughts, and heat waves. These changes not only threaten natural habitats but also have dire implications for agriculture, water supply, and human. ते जदि एमती ग्लोबल वार्मिंग हम ताहले कोन वाटर सप्लाई देन ह्यूमन हेल्थ गुडा पे इंपैक्ट पकड़ो.
That means efforts देखिवा combat combat global warming have gained momentum in the recent years with international agreements such as Paris Agreement aiming to limit global temperature rise well 2 degree Celsius, transi- uh, transitioning to the transitioning renewable energy sources, enhancing energy efficiency, and promoting sustainable land use practices are essential strategies in mitigating the effects of the global warming. Public awareness and grassroots movements also play a crucial role in advocating for environmental policies and the individual actions. Despite the challenges, there is still hope. Advances in the technology such as carbon capture and storage and innovations in sustainable practices provide pathways to reduce the carbon footprint. Collective action driven by the commitment and preserving the planet for future generation is vital. Addressing global warming is not only merely an environmental issue, it is a moral imperative that calls for global cooperation and solidarity by prioritize- prioritizing sustainability and embracing change. We can work together towards a healthier planet. तो ग्लोबल वार्मिंग ऊपर ଦେଇଥିଲା ଏକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିବାକୁ ଦେଇଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ କାହାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଫର ଆରେଞ୍ଜିଂ ବ୍ଲଡ ଡୋନେସନ କ୍ୟାମ୍ପ ଇନ୍ ଆୱାର ଟାଉନ। ତ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମର ନେମ୍ ତା ସହିତ ଆଡ୍ରେସ ଦେନ୍ ସିଟି କୋଡ୍ ଇମେଲ ତାପରେ ଡେଟ୍ ଲେଖିବା। ତ କ'ଣ ଆସିଲା ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର district health office name, officer address, city, state, zip code लिखिबा। Then subject request for arranging a blood camp donation. Here district officer name लिखिପାରିବା। I hope this letter finds you. I am writing to request your support in the organizing a blood camp donation. You attend as you blood donation is critical in saving lives, ensuring stable supply for medical emergencies. Our community has witnessed an increased demand for the blood, particularly in the light of recent health crisis accidents. By facilitating a blood donation camp, we can engage local residents, raise awareness about the importance of blood donation, and contribute significantly to our local health services. I propose that camp be held on suggested date and suggested venue ଲେଖିପାରିବା, which is centrally located and accessible to residents. We expected to collaborate with local organizations and volunteers to promote the event, ensuring the good turnout and the participations of eligible donors. We kindly request your office to provide the necessary resources such as medical staff, equipment, promotional materials to ensure the camp's success. Additionally, any guide or support from your office would be invaluable in navigating the logistics of this initiative. Thank you for considering our request. I am confident that with your support, we can make a meaningful impact in. I look forward to your positive response and hope to work together to organize this ideal event. Actually, position ବା ଯୋଉଥିରେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଲେଖିପାରିବେ। ଆଇ ଥିଙ୍କ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପେସେଜ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ। ଓଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା। Festivals are vibrant celebrations that reflect the culture, traditions, and the values of the community. They often mark significant events in history, seasons, religious observances, bringing people together in a spirit of joy and unity. Whether it's Diwali in India with its dazzling its light and firecrackers, or a carnival in Brazil
known for its lively studies and music. Such festival has its unique flavor, significance. During these festivals and the communities engage in their various activities such as dancing and performing traditional rituals. Food plays a central role with special dishes prepared that evoke uh, nostalgia and foster a sense of belonging. Festivals also provide an opportunity for artistic expression, showing local crafts, music, and dance forms, thereby preserving cultural heritage for cultural generations. ମାନେ ଉତ୍ସବ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି। ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ପାରମ୍ପରିକ ଧାରଣା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଏକ ଉତ୍ସାହଜନକ ରୀତି। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଇତିହାସର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା, ଋତୁ ବା ଧାର୍ମିକ ଅବସରକୁ ଚିହ୍ନିତ କରି ତଥା ଲୋକଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଏକତାର ଭାବନାରେ ଏକତ୍ର କରିଥାଏ। ଭାରତର ଦୀପାବଳି ଯାହାର ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ଓ ଦୀପଗୁଡ଼ିକର ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରି ଦେଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ, କିମ୍ବା ବ୍ରାଜିଲର କାର୍ନିଭାଲ ଯାହା ଅଦ୍ଭୁତ ପରେଡ୍ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ପରିଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ସବର ନିଜସ୍ୱ ରୁଚି ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଯାହାର ମଧ୍ୟରେ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖେ। ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରେ। ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଜାଗ୍ରତ ଦେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ମଜାଦାର କରିଦିଏ। ଉତ୍ସବ ସ୍ଥାନୀୟ କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ନୃତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥାଏ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତର ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଧାରା ଘର କରି କାମ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ଟୁ ଇଂଲିଶରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା କ'ଣ, ମା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହାତ୍ସବ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଏହି ପୂଜାରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଗୃହରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ଘରେ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପୂଜା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଓ ଆତ୍ମୀୟ ମନୋକାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ମହାଳୟ ସମୟରେ ଏହି ପୂଜାର ମହତ୍ଵ ବହୁତ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ମିଶି ସମାଜରେ ଏକତାର ସହିତ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, କଳା ଦେଖାଇ ପାରିବାରିକ ଓ ସାମାଜିକ ଏକତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅବସରରେ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ନାନା ରକମର ଭୋଗ ଚଢ଼ାଯାଏ। ବହୁ ଲୋକ ଦେବୀଙ୍କୁ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଉପାସ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ମା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା marked as one of the first major festivals in India is celebrated mostly West Bengal. Goddess Durga is worshipped in this puja. On this day, the idol of Ma Durga is installed in the house. This special preparation are started in every houses. During puja, during puja, people worship to fulfill their physical and family desires. Special ingredients are prepared during the worship of Ma Durga. During Mahalaya, the importance of this puja is enhanced. During this time, people gathered together and worship together in society. During this time, family and social unity enhanced by performance dance, music, art. On the occasion of the Durga Puja, in every house and the goddess is offered a variety of delicacies. Many people also worshipped the goddess to her grace. Due to this, a large crowd gathered in puja mandapa to see the goddess. Write a summary of the following passages in English and gave a title. ଯଦି ଆମେ ଆର କ'ଣ କରିବା, summary ଗୋଟେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ with title. Vijay Dashami is also known as Dasara, a significant Hindu festival celebrated with a great enthusiasm across the India and the various parts of the world. This festival marks the triumph of good over evil.
symbolized by the victory of goddess Durga over the buffalo demon Mahisasura. It falls on the 10th day of the bright fourth night of the month Ashwin, usually in September or October. The festivals of Dashmi are deeply rooted in mythology and tradition. According to the Hindu scriptures, goddess Durga was created by combined energies of the gods to defeat Mahishasura, who had terrified the heavens and earth. After a fierce battle lasting 9 nights, known as Navaratri, Durga embedded victorious, symbolizing the ultimate power of righteousness. This victory is celebrated not only as a reminder of the divine intervention but also as a celebration of how individuals overcome their own personal challenges and devils. The celebrations began with Navaratri, a nine festival dedicated to the worship of the goddess Durga. Each day of Navaratri is associated with the different forms of the goddess, and the devotees participate in the rituals, prayers, and the cultural activities, including dance and music. By the time the Vijayadashmi arrives, and communities are filled with a sense of joy and uh, accomplishment, having honored a goddess through the various forms of the devotion. Our Vijayadashmi, a climax of the celebration, occurs in many years. Many regions, effigies of the demon king Ravana, along with his brothers Meghanato and the Kumbhakarna, are structured and set ablaze. This act symbolizes the destruction of the arrogance, ego, and all forms of the spectators gather to witness the spectacle, celebrating the spirit of a victory and renew in the some culture. The day also marks the end of Durga Puja, with the immersion of the goddess idol in rivers or seas, signifying her return to her celestial. Vijayadashmi is not only a festival; it is also a reflection of the renewal. It is a reminder of the individual that their negative families are together and celebrating and share the sweet bonds and community. People often engage in the new ventures and projects, believing that the day is auspicious for beginnings. In conclusion, Vijayadashmi is a festival rich in the culture, heritage, spiritual significance. It teaches us the importance of perseverance, virtue, and ultimate triumph of good over evil as the eternal values of the right news and hope of that guide them through their life's challenges. This festival serves not only as the celebration of the goddess but also as an opportunity for the professional growth and collective unit। ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ଏବେ ଟାଇଟଲ କଣ ଥାଏ ବିଜୟ ଦଶମୀ ଦେବା ବିଜୟ ଦଶମୀକୁ ଆମେ କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଗ୍ଲୋବାଲି ଆଣ୍ଡ ମାର୍କେଟିଂ ଓଭର ଡେଭିଲ good over evil symbolized by the goddess Durga's victory to follow domain Mahishasura. The festival is deeply rooted in Hindu mythology, with goddess created by the gods to goddess created by the god to defeat the Mahishasura after the ninth battle known as the Navaratri. The celebration begins with the Navaratri, a night, a nine-night festival dedicated to worship Durga and ultimate with the effigies of the Ravana at a place symbolizing the destruction of arrogance and ego. The Vijayadashmi is not only just a festival but also a time for quick reflection and renewal, fostering a sense of community and encouraging a new ventures. It teaches us the importance of the preservation, virtue, and the triumph
କୋଡ୍ ଅଫରେବଲ୍। ତ ଏଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଆମର ସରିଲା। ତ ମନେ ରଖିବେ 399 ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ 3 ମନ୍ଥ ଦେନ୍ ଆସିବ ଆମର 599 ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ 6 ମନ୍ଥରେ ଆପଣ ଫୁଲ୍ କ'ଣ ପେଡ୍ କୋର୍ସ ନେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବା ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନେଇପାରିବେ ଆମ ପେଡ୍ ବେଚ୍ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏହାର ଆମର ଅଫର୍ ଚାଲିଛି ଏଥିରେ। ତେବେ ଦେଖିବା ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ାଇବା। ଏସ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ପଢ଼ା ହେବ। ଦେନ୍ ଏଥିରେ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ ତ ଚାଲିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ା ହେବ ନା ଏସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ା ହେବ ବା ଆମର ସିଜିଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ା ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରି ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ଆମର କ୍ଲାସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଇ ଥିଙ୍କ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ। ଯଦି ଏତିକି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯଦି ଏତିକି କ'ଣ ବୁଝୁଛି ତାହେଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।